Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So I am your computer teacher Sandhya Yadav, and from today onwards I'm going to teach you your computer subject. So in today's class we are going to start your very first chapter, chapter number 1, managing data in Access, basically data Access 2016. Okay, so learning in this chapter what is database, editing records in the table, starting Access 2013, editing fields in the table, table structure, editing the table structure, creating tables, closing Access 2013, entering data in the table. Okay, so a database provides an organized way of storing information. It helps to manage and access a large amount of information quickly and efficiently. So basically we are going to explore and learn about the database, okay, in this chapter. So let's get started. A computer is an electronic machine that inputs data, processes and gives result, right? So computer क्या करता है, डेटा को एज अ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है. Data means raw facts and figures, the contact details, marks scored by the children, prices of the items we purchase in our daily life, day-to-day life, are some of the examples of data with we are dealing every day. When data is processed, it becomes information and the data need to be stored and managed. So now student, here you can see that computer एक electronic machine है जिसे क्या होता है, डेटा की जरूरत होती है, प्रोसेस करता है, स्टोर करके वो हमें रिजल्ट देता है आफ्टर द प्रोसेसिंग. ओके, एंड व्हाट इज डेटा? सो डेटा हमें पता है एक रॉ फैक्ट होता है, फिगर होते हैं, जैसे कि डेटा कुछ भी हो सकता है, बच्चों की क्लास के मार्क्स हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो सकता है, प्राइस ऑफ एन आइटम हो सकता है एंड ऑल. सॉरी स्टूडेंट्स. नाउ मीनिंग ऑफ डेटाबेस. So database is an organized collection of related data values in such a way that they can be used to generate useful information which is necessary for the decision making process. It is easy to maintain small databases manually, but large databases like the information related to the store and process manually. An electronic database stored in the computer stores data effectively and helps to manipulate or retrieve it very quickly and accurately. So the data in the database is stored in the form of tables consisting of related rows and columns. So बच्चों, database जो है एक organized collection of related data है in such way that कि हम उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं एंड एट अ मोमेंट अगर हमें जरूरत है तो हम डेटा को रिट्रीव करके उसे यूज भी कर सकते हैं. एंड डेटाबेस बच्चों काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में स्टोर किया जाता है, जैसे गूगल की कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो गई, दे हैव देयर ओन डेटाबेस, वो उस डेटा को स्टोर करके रखते हैं. और इट इज वेरी इजी टू मेंटेन स्मॉल डेटाबेसेस, बट इन द केस ऑफ लार्ज डेटाबेसेस इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क टू मेंटेन इट. ओके, सो वहां पे जो डेटा स्टोर होता है वो आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल, ओके, रिलेटेड रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में. Now, database management system, that is DBMS, a computer-based application used to create, store, and manipulate the database is called DBMS, database management system. It helps in quick retrieval of processed information from the large complicated databases. Following are the some advantages of database management system. It is easy to learn and use. Its software reduce data redundancy and duplication of the same data. Its software are created for easy sharing of data. It reduces data inconsistency where when one file is updated, the same data in another file is also updated by DBMS to keep data consistent in both the table. Let's understand, okay? तो DBMS क्या होता है बच्चों? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस को क्या करता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है, जिसमें वो डेटा को स्टोर करता है, क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है. दैट इज कॉल्ड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाम से क्लियर हो रहा है. ये क्या करता है? क्विक रिट्रीवल में हमें हेल्प करता है, डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है. इसके काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, बट वी आर गोइंग टू लर्न सम एडवांटेजेस ऑफ DBMS. इट इज इजी टू लर्न एंड यूज एंड ऑल्सो डेटा रिडंडेंसी को कम करता है. डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब है? अगर कोई डुप्लीकेसी हो रही है डेटा की, सो उसे वो रिड्यूस कर देता है, एलिमिनेट कर देता है. और ये क्या करता है? इट्स सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड फॉर इजी शेयरिंग ऑफ डेटा एंड ऑल्सो बच्चों अगर डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है उसे भी ये एलिमिनेट कर देता है. नाउ डिड यू नो सम ऑफ द पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर Access, Open Office Base,
Oracle, Microsoft SQL Server, and MySQL, and Sybase, etc. So these all are the popular database management system. Now let's learn Access 2016. Okay, so Access 2016 is a database component of Microsoft Office 2016 suite. Okay, जब Microsoft Office suite होता है उसी के साथ ही ये Access आता है. It is one of the popular and most user friendly RDBMS. Why RDBMS? Relational Database Management System, because we save the data here in the form of tables that allows to store the information in the form of multiple correlated tables. Okay, as I told you just now. So database objects. So tables. Here are some objects which we need to understand the concept of database. Okay, first is tables. So tables are the basic concepts of database management system. Information in a table is stored in the form of columns called fields or attributes and different entries of related field values, okay, called records or tuples. An individual field value of a record is called data value or data item. It represents the smallest possible value in the database. So let me explain it to you. What is it? So बच्चों टेबल क्या है? एक बेसिक कंपोनेंट है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस टेबल में स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. ओके, दैट इज कॉल्ड फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, एंड डिफरेंट एंट्रीज ऑफ रिलेटेड field values are called record or tuples. Okay, so here you can see, let me explain it to you. So here you can see, this is called field, particular column, last name column, first name column, sequence number column, age column. These are fields. And now you can see this is particular, this is whole row is called tuple, called records. Okay, so ये आपका पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड और टपल्स है. इंडिविजुअल फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड डेटा वैल्यू. जो ये पर्टिकुलर फील्ड, जैसे सोनम, ये क्या है? डेटा वैल्यू. यहाँ पे मुकेश, ये क्या है? ये आपका डेटा वैल्यू. ठीक है. नाउ लेट्स सी क्वेरीज. So query is one of the database components which extracts or retrieves the specific information from one or more tables of the database that satisfies a criteria. So queries क्या है? Queries बच्चों एक तरीके से database component है, ठीक है, जो कि क्या करती है? एक्सट्रैक्ट और रिट्रीव करती है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को. ठीक है, जो कि एक या एक से ज्यादा टेबल से वो एक्सट्रैक्ट करती है. नाउ फॉर्म्स. दिस डेटाबेस कंपोनेंट एक्ट्स as a user interface to enter, edit, view or search the data stored in a single or multiple tables. Okay, forms क्या होता है? forms जो database component है वो as a user interface work करती है, जिसमें हम edit कर सकते हैं, enter कर सकते हैं और अपने data को देख भी सकते हैं, जो कि मल्टीपल और सिंगल टेबल्स में स्टोर होती है. रिपोर्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल्स और queries in a printable format to perform different type of data analysis on the expected information. So report क्या करती है? वो हमें printable format को represent करती है so that we can analyze the data. Okay. Now let's see how to start Access 2016. So click on the Start button and Microsoft Office Access 2016. Microsoft Office 2016 startup screen appears, providing options to start with a new database from scratch, or by using a database template. You can also use it to open the existing database. Now, if you want to create a new database, so follow the step creating a new database. To create a new database, follow the given step. Select a blank desktop. Okay, database option from the startup screen. A pop-up window appear. Here you can see this is the blank database. Okay, after that enter the database name, the file name box which shows the default database name as database1. Here you can see. Okay, and now click on create button. A new blank database with an empty table is opened in Access database window. Okay, so here you can see, first you have to select blank desktop database option. After that you can see this is the database one, and you have to click on create button, and you can see this is the new blank database area. Okay, so here this is the place where you are going to enter your data. Now structure of the table, let's understand it. So the table structure defines the kind of table and the field it has. Okay, it defines the name, size and the type of various fields. A data type determines the type of data in a field. There are different data types, okay, in Access. For example, short text, a short text field
contains letters, numbers and symbols. The numbers in a text field are considered as text and cannot be used for calculation. It can store up to 255 character, for example A1, 13, Naman, etc. So short text जो होता है आपका letter हो गया, number हो गया, symbol को store करने के लिए use किया जाता है. So now let's see the another type of data type, number. A number field with the number data type contain only numbers. A numeric field does not accept letter or other symbol except number. For example, you can see here these all are numbers. Now auto numbers and auto number fields store unique values automatically when a new record is created in the table. बच्चों आपने देखा है कभी आप साइन अप कर रहे होते हैं, साइन इन कर रहे होते हो तो आपको एक यूनिक आईडी कभी कभी जनरेट होती है. That's because of the auto number, auto something. They have something feature called auto. So because of that, your ID gets generated. So this data type is mainly used to create primary key fields. Okay. So basically इस primary key fields की वजह से ही आपका डेटा आप जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि जो primary key fields होती है ये यूनिक होती है, एक ही होती है. Now currency, a currency field contains symbols for currency, decimals and commas wherever needed. For example, here you can see that currency बच्चों आपको पता है हर country की अलग अलग होती है. So currency is the most important type of data type. Okay, and it contains symbol. Now date and time, a date and time field contains the date and time. Calculation can be done on this field. For example, here you can see these all are the formats of date and time. Okay. Now large text, large text field contains long text with all the kinds of data. It can store up to 65,535 characters. For example, my name is Arun, I live in Delhi, etc. So this is a long text which you can store in large text. Okay. Yes and no. A logical field contains character to represent yes or no, true or false. For example, Y for yes and N for no, F for false and true for false. So this is the kind of yes and no data type. Now let's see how to create table. Creating tables. Tables are the fundamental data types, data building blocks of the database. Unless we have database tables with data values stored in them, no other database objects can be created. There are mainly two ways to create a table: datasheet view and design view. So students, whenever you are going to create a table, so table जो है आपका fundamental क्या है, data building block है किसी भी database का. Okay. Unless we have database tables with data values stored in them, no other database object can be created. Okay. So दो टाइप के डेटा आपके पास, दो टाइप से टेबल्स होती हैं. कैसे आप दो टाइप से टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हो, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू. ओके, सो नाउ लेट्स क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डेटा शीट व्यू. So in this method, Access display a new blank table named table 1 opened in datasheet view. We can add fields to this table simply and can enter data. Okay, so अभी जो हम डेटा क्रिएट करने जा रहे हैं by using datasheet view, यहाँ पे जो by default name होगा that is table 1. To create a table using datasheet view, follow the given step. Click on the create tab from the tables group, click on the table option. Okay, now आपको कहाँ पे क्लिक करना है, create tab पे क्लिक करना है. टैब पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल्स ग्रुप में जाना है and you can click on the table option. After that, the new table opens automatically in datasheet view. Notice that the new table contains a field named ID having type auto number. Okay, जो अभी समझा था, जो कि प्राइमरी की तरह वर्क करती है, which acts as the primary key field of the table. If you want to rename this field, double click on the field heading row, heading showing the name ID and gives the table name. So जैसे ही आप उस पे टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी एक टेबल ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली. कहाँ पर, डेटा शीट व्यू में. और साथ में ये नोटिस करना, जो न्यू टेबल आपने भी जिस क्रिएट की है उसमें आप एक चीज देख पा रहे हैं, और आईडी. ठीक है, जो आईडी है ये ऑटो नंबर है. ठीक है, डेटा टाइप इसका ऑटो नंबर है और ये प्राइमरी की तरह वर्क करती है. साथ ही बच्चों अगर आप इसे रिनेम करना चाहते हो, सो यू कैन इजीली रिनेम इट. जस्ट double click on it, okay, and rename it. Now let's see adding new fields in the datasheet view. To add new fields in the datasheet view, follow the given steps. Click on the next column header, click to add. A list of data types will appear. Choose a data type. The default header name field 1 will appear in selected mode. Enter the name for the field and press tab key to move on the next column. So here you have to click on the next column and you will see you are getting the option to choose the data type. Okay, जब आप दूसरे कॉलम में क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं कौन से टाइप का आपको डेटा टाइप चाहिए.
Okay, so you have to select the data type and repeat the process to create next field. Continue till all the fields are defined. तो आपको ये कंटिन्यू करना है जब तक आपकी सारी फिल्स कंप्लीट नहीं हो जाती जितनी आपको चाहिए. एंड क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. गिव अ सुटेबल नेम टू योर टेबल एंड क्लिक ऑन ओके बटन. सो डू नॉट फॉरगेट टू सेव योर टेबल. सो कैसे करेंगे, पहले आपको कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द सेव बटन. कहाँ पे, ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार के पास. सेव बटन पे क्लिक कीजिए एंड आपको एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उसमें आपको अपना नेम, फाइल का नेम, आई मीन टेबल नेम लिखना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है. Now we are going to see the another method to create a table using design view. In this method, table structure is created first. Okay, we define field names and their data type before actually creating a table. Okay, इसमें पहले ही आपको क्या करना होता है, टेबल के स्ट्रक्चर को बनाना होता है. To create a table using design view, follow the given step. Click on the create tab again from the tables group and click on the table design. A blank table structure will open in design view. Okay, now here you can see this is the table design. You have to click here and the design view is divided into two sections: field grid area and field properties area, if you can see here. Okay, so this is the field property area and this is field grid area. After that, field grid area is used to specify the field name and its data type. Okay, यहाँ पे आपको field का नाम और उसके data type को mention करना है. And find properties area is used to specify the properties of each field. Is it clear? Now click in the field name column and enter the field name. Now after that, in the step number 3, click in the data type column and choose the suitable data type for that field. Again आपको क्या करना है, data type column में click करना है और suitable data type को choose करना है. Repeat the above steps to add rest of the table fields. Now again, once finished with the process of defining table fields, save your table and give it a suitable name. So this is how you are going to create a table by using design view. Okay, now let's understand the primary key. I have already said that term 2 times. So now it's time to understand this term, primary key. A table should have at least one field that has a unique value for each record. Okay, this field is called the primary key of the table. For example, in a school database, the roll number of each student uniquely identify each student. Two students can have the same name, but they can never have the same roll number. So the roll number field is the primary key. A primary key does not allow null values and a primary key must always have a unique value. So primary key बच्चों क्या होती है, प्राइमरी की होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वन इन अ टेबल. और प्राइमरी की क्या करती है, यूनिकली फाइंड करने में आपको हेल्प करती है. ओके, एक पर्टिकुलर पर्सन को और फील्ड को. अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो प्राइमरी की होती है, जैसे आपकी क्लास में एक बच्चे के जैसे 2 स्टूडेंट्स है, दे कैन नॉट हैव द सेम रोल नंबर बट कैन हैव द सेम नेम. ओके, बट अगर रोल नंबर सेम हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना. बट इस केस में प्राइमरी की आपका व्यू में आता है वेयर वी हैव द सेम यूनिक, आई मीन वेयर वी हैव द यूनिक आईडी, नॉट द सेम आईडी. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट यूनिक आईडी हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, टपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ द प्राइमरी की इन अ टेबल. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज यूज्ड टू फाइंड द यूनिक, आई मीन इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ इन द टेबल. मतलब किसी रिकॉर्ड को फाइंड करने में टेबल में हेल्प करती है, बट दैट शुड बी यूनिक, ओनली वन इन द टेबल. ओके, नाउ let's see assigning primary key. To assign a primary key, follow the given step. Select the field name in the design view you want to use as a primary key field. Now click on primary key field in the tools group on the design tab. A key indicator gets added to the left of the field name in the field grid area. Save the table structure. So how are you going to use it? So to do this, to add a primary key, you have to select the field name in the design view and which you want to use as a primary key field. फिर आपको क्या करना है, आपको डिजाइन टैब में जाकर टूल्स ग्रुप को सिलेक्ट करना है एंड वहां पे आपको प्राइमरी की का ऑप्शन मिलेगा. हियर यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी की विच यू हैव टू सिलेक्ट. ओके, इन द टेबल डिजाइन, ओके, टैब. नाउ आफ्टर दैट you can see save the table structure. So at the end you have to save the table structure. Now let's move forward and let's see how to enter data in the table. Once the table structure is defined, we can store data in it. We can enter data in the datasheet view.
So select view from the views group of the home tab and select data sheet view. So बच्चों अगर आपको डेटा को ऐड करना है, एंटर करना है in your table, so you have to, once the table structure is defined, we can store data in it, right? So आपको डेटा शीट व्यू में आप डेटा एंटर कर सकते हैं. उसके लिए आपको पहले अपना व्यू चेंज करना होगा, बिकॉज वी हैव टू व्यूज, राइट? डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू. सो आपको डेटा शीट व्यू में जाना है. To change the view, you have to click on the table design view, and you can see here in the view, click on this area and select data sheet view, or simply double click the table name in the navigation pane. Okay, now the selected table will open in data sheet view, and that is data entry mode. Now step number 2, see here, enter the field value while using tab keys to navigate from one field to another. New row will be added automatically to enter the next record in the table. अब बस आपको क्या करना है, जैसे ही आप डेटा शीट व्यू में के मोड में चले जाएंगे, सो आपको यहाँ पे अपनी जो फील्ड है, ओके, उसमें आपको अपनी फील्ड वैल्यू को एंटर करते रहना है. टैब की को प्रेस करेंगे, यू विल मूव टू द नेक्स्ट data field. Okay, now tab key is used to navigate from one field to another. And here एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप टैब को प्रेस कर एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे जा रहे हो, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फील्ड्स यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट रो, ओके, टू एंटर द न्यू टपल और रिकॉर्ड. क्लियर? सो आपको क्या करना है, जैसे आपने इस फील्ड को कंप्लीट कर लिया, इस फील्ड को कंप्लीट कर लिया, इस फील्ड को कंप्लीट कर लिया, नाउ यू हैव टू राइट इन द नेक्स्ट रो. डेटा आपको नेक्स्ट उसमें एंटर करना है. बेसिकली जस्ट क्लिक ऑन द न्यू हियर एंड आप जो नया रिकॉर्ड है उसे एंटर कर सकते हैं आसानी से. ओके, नाउ लेट्स सी एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन द टेबल. Data entered in the table can be changed or modified easily if needed. To make changes in the entered data, follow the given steps. Select the table from the navigation pane and open it in the data sheet view by double clicking on it. So basically you do have table here. Okay, आपको क्या करना है, आपको navigation pane से अपने टेबल में नेविगेट करना है, जिसमें आप चेंजेस एडिटिंग करना चाहते हो. क्लिक इन द फील्ड ऑफ द पर्टिकुलर रिकॉर्ड whose value is to be modified. A blinking cursor will appear in the cell. अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको उस फील्ड पे क्लिक करना है जिसके रिकॉर्ड को आप क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो. उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लिंकिंग कर्सर नजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल आप 4th रिकॉर्ड का क्या करना चाहते हो, स्टूडेंट नेम की फील्ड को एडिट करना चाहते हो, तो वहां पे आपको क्लिक करना है, मेक द डिजायर्ड चेंजेस इन द डेटा और एंटर द न्यू फील्ड वैल्यू एंड सेव योर चेंजेस. Okay, now inserting or deleting records, we can add new record into a table or remove the unwanted record as needed. So आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो न्यू रिकॉर्ड को भी ऐड कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो जो कि आपके नो लॉन्गर यूज्ड है. अगर आपको इंसर्ट करना है कोई न्यू रिकॉर्ड, इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड, to insert a new record into the table, follow the given step. Open the table in the data sheet view in which records is to be added. Now click on new in the records group of the home tab. Access adds a record at the end of the table. अब बच्चे इसमें क्या करना है, आपको अगर आपको इंसर्ट करना है, किसे इंसर्ट करना है, न्यू रिकॉर्ड को. हियर यू कैन सी, अगर आप कोई न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको अपने टेबल को ओपन करना है डेटा शीट व्यू में एंड आपको न्यू पे क्लिक करना है. जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, हियर यू कैन सी, आपको होम टैब में जाना है. होम टैब में आप यहाँ पे न्यू का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे. सो आपका क्या होगा, एक्सेस एड्स रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द टेबल. हियर यू कैन सी एक्सेस add a record at the end of the table. Enter the fields value of the new record. Once finished with the record entry, press tab key to go to the next row for adding another record in the table. Clear? So now let's move forward and let's see editing fields in the table. अगर आपको कोई field edit करनी है, so data entered in a table can be changed or modified easily if needed. To make changes in the entered data, follow the given step. First, select the table from the navigation pane and open it in the datasheet view by double clicking on it. So आपको पहले टेबल को सिलेक्ट करना है अपनी नेविगेशन पेन से एंड क्या करना है, डेटाशीट व्यू में उसे ओपन कर लेना है. फॉर एग्जांपल टेबल 2 को हमने सिलेक्ट कर लिया है. टेबल 2 को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, click in the field of the particular record whose value is to be modified. A blinking cursor will appear in the cell. Make the desired changes in the data or enter the new field value and save your changes. So just click on in the field where you want to change. Okay, for example मैं student name के field में change करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ click करूंगी. Okay, cursor appear हो जाएगा. You can just edit it and save your changes. Is it clear? Now let's see
inserting or deleting records. So we can add or delete a new field in the table while working in a datasheet view using the blank column which shows the column header. Click to add. We can also add fields in between existing field. अब बच्चों अगर हमें कोई न्यू फील्ड को ऐड करना पड़ गया या डिलीट करना पड़ गया तो हम डेटा शीट व्यू का यूज कर कर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई न्यू फील्ड ऐड करनी है तो आप कॉलम हेडर पे क्लिक टू ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं एडिंग अ फील्ड। To add a new field in the table, follow the given step. Right click on the column header where new column is to be inserted and choose insert field from the shortcut menu to add a न्यू डेटा फील्ड। अब बच्चों आपको क्या करना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट क्लिक करना है कॉलम हेडर पे। यहाँ पे कॉलम हेडर पे राइट क्लिक करेंगे, ये कॉलम हेडर है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन चूज करना है और आपका जो न्यू शॉर्ट, ठीक है, जैसे आप इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फील्ड ऐड हो जाएगी आपके टेबल में। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स सी डिलीटिंग अ रिकॉर्ड। To delete a record from the table, follow the given step. So open the table in the data sheet view from which the record is to be deleted. Okay, आपको क्या करना है, आपको अपनी टेबल को ओपन करना है, किसमें, डेटा शीट व्यू में, जिसकी रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो। क्लिक इन द रो हेडर एरिया टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड। अब बच्चों आपको उस रो हेडर को क्या करना है, उस रो हेडर पे क्लिक करना है जिसका रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो एंड क्लिक ऑन द डिलीट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सिलेक्ट डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन इन इट। अ confirmation box will appear. Click on yes button to permanently delete the selected records from the table. So let me explain it to you how you have to delete it. First ओपन योर टेबल, आपको अपना टेबल ओपन करना है डेटा शीट व्यू में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस रो को, रिकॉर्ड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में जाकर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिलीट ऑप्शन, कहाँ पर, डिलीट रिकॉर्ड के ग्रुप में। ठीक है, जब रिकॉर्ड्स ग्रुप में आप जाएंगे तो आपको इस डिलीट पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक डिलीट रिकॉर्ड। आपको एक कंफर्मेशन के लिए प्रॉम्प्ट आएगा एंड ये इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सो आपका वो रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी editing fields in the table. We can add or delete a new field in the table while working in a data sheet view. The blank column which shows a column header, click to add. We can also add fields in between existing field. अब बच्चों आपको अगर टेबल में fields को edit करना हुआ, how can you do that? So adding a field, for example, आप field को add करना चाहते हो, so कैसे करेंगे? To add a new field in a table, follow the given step. Right click on the column header where new column is to be inserted. आपको कहाँ करना है, राइट क्लिक करना है, कहाँ पे, कॉलम हेडर पे एंड चूज इंसर्ट फील्ड फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू टू ऐड अ न्यू डेटा फील्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू डेटा फील्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिलीटिंग अ रिकॉर्ड। टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप। ओके, सो इफ यू वांट टू डिलीट अ, सपोज आपको कोई कॉलम डिलीट करना है। ओके, अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे कॉलम करेंगे डिलीट, टू डिलीट अ कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑफ द फील्ड नेम विच इज टू बी रिमूव्ड। ओके, यहाँ पे आपको कहाँ क्लिक करना है, आपको कॉलम हेडर पे क्लिक करना है। बच्चों यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आपको आपके डेटा जो आपका टेबल है उसमें कॉलम हेडर पे क्लिक करना है। माय बैड स्टूडेंट्स, आपको कहाँ क्लिक करना है, कॉलम हेडर पे क्लिक करना है। ओके, अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करनी है तो आपको रो हेडर पे क्लिक करना है और वहीं पर अगर आपको पूरा फील्ड डिलीट करना है तो आपको कॉलम हेडर पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन डिलीट फ्रॉम द टूल्स ग्रुप ऑफ द डिजाइन टैब एंड सिलेक्ट डिलीट कॉलम ऑप्शन इन इट। अ कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सो यहाँ पे समझे, आपको इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में यहाँ पे आपको रो हेडर सिलेक्ट नहीं करना, कॉलम हेडर सिलेक्ट करना है एंड डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट कॉलम पे आपको क्लिक करना है। आपको क्लिक ऑन यस बटन, कंफर्म द डिलीशन, सेव द चेंजेस, और यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। आपको अपने कंफर्मेशन देनी है डिलीशन की एंड वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। Now let's see editing the table structure. Okay, so table once created can be modified easily.
Even if the data is entered in it, we can add some new data fields to the existing table or remove the unwanted data field from the table. Open the table in the design view using views group of home tab. अब बच्चों, अगर आपको अपने टेबल स्ट्रक्चर को एडिट करना है, सो उसे एडिट करने के लिए कैसे करेंगे, ये काफी आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है अगर आपने डेटा एंटर कर दिया है तब भी। ओके, वी कैन ऐड सम न्यू फील्ड्स, ओके, न्यू डेटा फील्ड्स जो कि हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें, और अगर आप चाहते हैं कोई रिमूव करना, सो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद व्यूज ग्रुप ओपन करना है एंड देन डिजाइन व्यू में जाना है, डिजाइन व्यू पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे व्यू पे क्लिक करते हैं डिजाइन व्यू आपको दिख रहा है। ठीक है, नाउ एडिंग न्यू data fields. How are you going to add it? To add new data field to the table, follow the given step. Select the field name before which you want to add a new field. Click on insert row, choose insert field from the shortcut menu to add new data field. Okay, so here you can see, first of all, select the field name before you want to add a new field. Click on insert row. Here you can see this is the insert row, you have to click here. Okay, after that choose insert field from the shortcut menu. Here can you see that आपको कहाँ क्लिक करना है, आपको इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है। इंसर्ट रो पे क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है। इंसर्ट फील्ड पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, आपका जो न्यू डेटा फील्ड है वो ऐड हो चुका होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी डिलीटिंग डेटा फील्ड्स। ओके, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करना है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी परफेक्टली। ओके, so now student, let's understand deleting data fields. Okay, so to remove an unwanted data field from the table, follow the given steps. Select the data fields to be deleted. Click on delete row from the design tab. If the field is not empty, that is if there is some data in the field, access ask for a confirmation, click on yes button to delete the field. Now what you have to do student, अगर आप कोई डेटा फील्ड डिलीट करना चाहते हो तो उसे डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, उस फील्ड को पहले सिलेक्ट करना है। Here you can see, फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस डिलीट रो पे क्लिक करना है। कैसे, टेबल डिजाइन टैब पे आप क्लिक करेंगे एंड डिलीट रोज पे क्लिक कर देंगे। सो बच्चों, जैसे ही अगर वो एम्प्टी फील्ड जो है एम्प्टी नहीं होगा तो आपसे वो कंफर्मेशन मांगेगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन yes. Okay, now closing access 2016, so click on close button on the right side of the title bar to close access app. आपको यहाँ पे close पे जो क्रॉस बटन दिख रहा है आपको टाइटल बार के राइट साइड में, वहां पे क्लिक करना है एंड आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। नाउ लेट्स सी vocabulary. So database is an organized collection of related data values in such a way that they can be used to generate यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब बच्चों, डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है आपके रिलेटेड डेटा वैल्यूज का, जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हो। फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स आर इंफॉर्मेशन इन अ टेबल विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। अब बच्चों, जो फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, आपका इंफॉर्मेशन होते हैं टेबल में जो कि आपके कॉलम्स, मतलब किसमें, which is stored in the form of columns, and record and tuples are different entries of related field value. Data value and data item is an individual field of a record, whereas null value is a data value that doesn't exist. Null value भी क्या है, एक data value है, okay, जिसमें doesn't exist means कुछ भी नहीं है। In a nutshell, now database is an organized collection of related data values in such a way that they can be used to generate useful information. A computer-based application used to store, create and manipulate database is called database management system, that is called DBMS, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, आपकी हेल्प करता है डेटा को क्रिएट करने में, आई मीन डेटाबेस को क्रिएट करने में, उसे मैनिपुलेट करने में, ऑल्सो स्टोर करने में। Tables are the basic components of a DBMS, that is database management system, and query is one of the database component which extracts or retrieves the specific information from one or more table of the database that satisfies a criteria. Now query क्या है बच्चों, database component है जो कि आपको क्या करती है,
इंफॉर्मेशन आई मीन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है. नाउ फॉर्म्स एक्ट एज अ यूजर इंटरफेस टू एंटर, एडिट, व्यू और सर्च द डेटा स्टोर्ड इन अ सिंगल और मल्टीपल टेबल. अब बच्चों फॉर्म क्या है, एक्ट करती है एज अ यूजर इंटरफेस, क्या करने में, एंटर करने में, आपके डेटा को एडिट करने में और सर्च करने में भी, सो दैट आपका क्या हो, वो डेट जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सको, राइट. और ये जो आप कह मतलब फॉर्म जो एक इंटरफेस है, बेसिकली आप इसे एक नहीं बहुत सारे टेबल्स में यूज कर सकते हो. whereas reports are used to present that data stored in the tables or query in a printable format to perform different type of data analysis on the extracted information. Tables are the fundamental data building blocks of database. There are mainly two ways to create a table: data sheet view and design view. A table should have at least one primary key that has a unique value for each record. So बच्चों यहाँ पे जो reports हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारे tables होती हैं उनको क्या करता है, एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में रेडी कर देता है, जो कि हमें डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करती है. ओके, और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट जो वो करता है उसको एनालाइज करने में. ओके, जो टेबल्स है वो फंडामेंटल डेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका, एक डेटाबेस का. वहीं पर इसको दो तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू. टेबल में बच्चों एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए, ये ऑलवेज ध्यान रखना. ओके, so that's all for this chapter. Now what you have to do, you have to revise the chapter, okay, and also try to do a practical on your own. Okay, and after doing a practical and revising a chapter, check your knowledge. Okay, now I'm gonna meet you in the next class with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring, students. Bye bye, students.